Hello students, in this video we will discuss the oxides of group 15 element, and in this we will discuss oxides of nitrogen and phosphorus. It is a topic from P block elements class 12th chemistry. So let's start. phosphorus के oxides जो हैं P4O6 and P4O10. So we need to draw the structures for these and tell the number of sigma bonds and covalent bonds present in these. So let's draw the structure for P4O6. There is chair conformation like this. Now over these three phosphorus atoms there are oxygens. And these three oxygens are connected with the phosphorus atom. So आपका ये स्ट्रक्चर हो गया P4O6 के लिए 1 2 3 4 and 6 1 2 3 4 5 6 राइट. इसमें जो आपके सिग्मा बॉन्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Number of sigma bonds are 12 and pi bonds are 0 in this case. Next जो स्ट्रक्चर है आपका that will be for P4O10. P4O10 draw करने के लिए what you will do, you will make the double bonds with the phosphorus atoms, right? This is the structure for P4O10, right? P4O10 है and इसमें आपके number of sigma bonds 12 रहेंगे and pi bonds are 4 1 2 3 and 4. So these are the structures for oxides of phosphorus. Next जो है which you need to carefully study is the oxides of nitrogen. Oxides of nitrogen में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं N2O, dinitrogen oxide, which is also known as laughing gas, and it is also used in anesthesia. So its structure: nitrogen, triple bond to nitrogen, two bonds, two atoms के बीच में triple bond and one coordinate with the oxygen, right? इसका जो lone pair है ये यूटिलाइज हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ, and here with this nitrogen one lone pair is present, right? Next है आपके पास structure of NO, nitrogen और nitric oxide. So इसका structure N double bond O. डबल बॉन्ड O क्यों बनाया हमने? बिकॉज ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दीज विल फॉर्म बॉन्ड NO, राइट? और इस केस में आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर में प्रेजेंट हैं एंड हियर इट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. So due to this unpaired electron in gaseous state, nitric oxide exists, or we can say it is paramagnetic. Gaseous state में. However, अगर आप draw करें nitric oxide का diagram or structure for the liquid or solid state, you will find out that its structure will be diamagnetic. It will be diamagnetic. देखें कैसे? इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, दूसरा मॉलिक्यूल हमने ड्रॉ किया, यहाँ इसके पास लोन पेयर अपने प्रेजेंट है ही,
और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था. So these unpaired electron will form the bond. So in this way, in this case, it is diamagnetic. Right? So question is, why nitric oxide is paramagnetic in gaseous state and it is diamagnetic in solid and liquid state? You can see the reason from the diagrams. Next जो आपके पास है, it is your नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं. नाइट्रोजन double bonded to oxygen and one coordinate bond and one unpaired electron over the nitrogen, right? 6 electrons. So question आपको पूछा जा सकता है, draw the structure for nitrogen dioxide and its resonating structures. Resonating structure बनाने के लिए आप what you will do, कोई एक bond opposite कर दीजिए. इस केस में तो दोनों ही हो जाएंगे. So this is the resonating structure for nitrogen dioxide and covalency इसमें क्या रहेगी? Your covalency is 3 in this case because 3 bonds are formed. Next है आपके पास ऑक्साइड नाइट्रोजन का, that is your N2O3. N2O3 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए what you will do, you will join NO2 plus NO. Structures of NO2 and NO. Let's draw. यहाँ पर इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था. नाइट्रोजन ऑक्साइड में अगर हम बात करें, यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. So these unpaired or odd electrons will form the bond, and here in this case it will be diamagnetic. डायमैग्नेटिक होगा. और अगर हम इसमें नाइट्रोजन की कोवेलेंसीज की बात करें, इस वाले नाइट्रोजन की आपकी कोवेलेंसी है 1, 2, 3 and 4. 4 bonds are formed and in this case कोवेलेंसी है आपकी 3. राइट. नेक्स्ट है आपका N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड. N2O4 we can simply say it is a dimer of NO2, right? NO2 plus NO2 gives N2O4. So their structure, here it is having one unpaired electron. Unpaired electron, they will form the bond, and in this case also it will be diamagnetic. Covalency is 4 and 4. Right? Next है आपका N2O5. N2O5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए what you will do, NO2 plus oxygen plus NO2. So its structure will be nitrogen double bonded to oxygen, one coordinate bond with the oxygen, one pair unpaired electron. Here oxygen 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So here also it will bond with the nitrogen's unpaired electron. This is the structure for N2O5. Nitrogen bonded to oxygen, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर भी इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था दूसरे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पास. सो यहाँ पर इसने ऑक्सीजन ने इन दोनों के साथ एक एक बॉन्ड बना लिया और अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया, बिकॉज ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड phosphorus, and from these the questions are asked that
you need to tell about the resonating structure, about their covalencies, and what else is remaining, the number of sigma and pi bonds may be asked. So this is all about the oxides of group 15, which is in your syllabus, that is of nitrogen and phosphorus. Thank you very much.